Hello and welcome to Weekly Wrap, where we get you latest news and updates of top events from Cryptoverse that happened in the past week. I am Ruchi Sharma. And I am Vishakha Thakur. Virtual digital assets experienced a roller coaster ride during truncated week, with prices at one moment speeding higher, largely led by upbeat investor sentiments towards Bitcoin, while they slide lower next moment as the fears of more US interest rate hikes forced investors to seek safety in lower risky assets such as bonds. Bitcoin had a rough ride. The largest cryptocurrency by market capitalization had scaled 13-month higher, surpassing $31,500 mark as BlackRock refiled for spot Bitcoin ETF application, with the Securities Exchange Commission boosted investor optimism. However, the release of FOMC minutes and stronger than expected private jobs data are suggesting Fed to take hawkish stance. Bitcoin quickly retraced below $30,000 mark. It was recently quoting at $30,114, down 1.68%. Ethereum suffered the most, losing 3.55% to change hands at $1,854. Interestingly, Bitcoin has had 2 consecutive green quarters this year after breaking its negative streak in Q1 2023. For the first quarter, Bitcoin posted a return of 71.77% and 7.19% at the end of the second one. During 2022, the crypto asset posted quarterly returns of -1.46%, -56.2%, -2.57%, and -14.75% in Q1, Q2, Q3 and Q4 respectively. तो यहाँ हमने देखा विशाखा कि थोड़ा सा बिटकॉइन में, इथेरियम में और बाकी ऑल्ट कॉइन्स में हमने थोड़ा सा डिप देखा। उसके 3 बहुत मेजर रीजंस थे। पहला तो ये था कि ऐसा सोचा जा रहा है, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेड जो है फिर से रेट हाइक करेगा, एक ये रीज़न है। दूसरा ये है कि अभी पिछले ही हफ्ते बिटकॉइन ने अपने 13 मंथ हाई को जो है वो टच किया। उसके बाद हमने देखा कि इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुकिंग की, मतलब प्रॉफिट टेक किया उसमें से। और तीसरा ये कि जो CME है, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है, उसमें आज यानी कि 7 जुलाई को $1 बिलियन वर्थ बिटकॉइन फ्यूचर्स जो हैं वो एक्सपायर हो रहे हैं। तो इसने भी कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है मार्केट को, इसलिए हमने ये डिप देखा है फिलहाल। और इसके साथ साथ जैसे ब्लैक रॉक या आर्क इन्वेस्ट, हम सभी लोग सोच रहे थे कि शायद इनकी जो बिटकॉइन स्पॉट ETF फाइलिंग्स है वो एक्सेप्ट हो जाएंगी, लेकिन फिर इन्हें रीफाइल करने के लिए बोला गया। बिल्कुल। Moving on, a UK bill giving regulators the power to supervise crypto and stablecoins was approved by King Charles Thursday, marking the last formal stage that makes the bill a law. Royal Assent, a purely procedural step following agreement from lawmakers, makes the Financial Services and Markets Bill an act and includes measures to bring crypto and stablecoins into the scope of regulation. The bill was last week approved by the upper chamber of Parliament. तो यूके बिल जो कि यहाँ पे किंग चार्ल्स द्वारा अप्रूव कर दिया गया है, तो ये जो बिल है ये जो रेगुलेटर्स हैं उन्हें पावर देता है टू सुपरवाइज क्रिप्टो एंड फाइनेंशियल सर्विसेज या जो स्टेबल कॉइन्स हैं उन्हें सुपरवाइज करने के लिए। तो इसके पहले भी लास्ट वीक यहाँ पे अपर चेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा ये जो है अप्रूव कर दिया गया था और लास्ट ईयर जुलाई 2022 में ही ये जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। तो कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन और जापान के बाद अब यूके भी है जो कुछ हद तक सॉर्टेड है या रेगुलेटेड है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। बढ़ते हैं आगे। Microsoft, Reid Hoffman, Bill Gates, Eric Schmidt, and Nvidia led a $1.3 billion fundraising round for Inflection AI. With the support of GPU cloud provider CoreWeave, the generative AI startup claims that it will develop the world's largest AI cluster consisting of 22,000 Nvidia H100 Tensor Core GPUs. Inflection AI is one of several startups working on massive language models, including Microsoft-funded OpenAI and Google-backed Anthropic. Inflection claims that if it deploys its 22,000 GPU cluster, it will be able to run a system with 22 exaflops in 16-bit precision mode, making it the second most powerful supercomputer on the top 500 list of fastest systems. एक और अच्छी खबर है यहाँ पे, इन्फ्लेक्शन AI जो है उन्होंने डेवलप किया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट AI क्लस्टर, और उसके लिए एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज एंड बिल गेट्स जैसी बड़ी हस्तियों ने जो है फंड रेज किया है। $1.3 बिलियन का टोटल फंड रेजिंग इसके लिए हुई है, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है। और साथ ही साथ अगर ये हो जाता है, सब कुछ सक्सेसफुल चलता है, तो ये सेकेंड मोस्ट सुपर पावरफुल सुपर कंप्यूटर होगा इन द टॉप 500 लिस्ट ऑफ द फास्टेस्ट सिस्टम्स।
वेल दिस इज अ ग्रेट न्यूज़। जैसे कि आपने कहा कि बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई या जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनीज इसके पीछे जुड़ी हैं, इन्होंने कैपिटल रेज किया है, तो बहुत इनके सपोर्ट से आई थिंक काफ़ी अच्छा ये जो प्रोजेक्ट है वो निकल कर आ सकता है। बिल्कुल। Moving on, AI has been used in radiology to analyze and locate tumors on scans to improve cancer screening. AI-based solutions can assist pathologists in making more accurate and consistent cancer diagnosis, lowering case error rates. Predictive AI models can assess a person's likelihood of developing cancer by identifying risk factors. Typically, physicians spend between 25 minutes and 2 hours contouring or outlining bones and organs on approximately 100 scan cross sections for each patient. However, researchers say the AI program operates 1.5 times faster. तो यहाँ पे जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है इंडिया की एक रिपोर्ट है कि 9 में से जो एक इंडिविजुअल है उसे कैंसर डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। तो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा ऐसा कैंसर, क्योंकि कीमोथेरेपी या कितनी चीज़ों से गुजरना पड़ता है एक पेशेंट को और कितना पेन होता है। लेकिन अब अच्छी खबर यहाँ पे ये है कि जो एआई है, एआई के टूल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एंटायरली। तो यहाँ पे एआई टूल्स कुछ ऐसे भी हैं जो कैंसर पेशेंट्स का जो वेट टाइम है वो रिड्यूस कर सकते हैं, और जहाँ फिजिशियंस को 2 घंटे लग जाते हैं एक बोन को आउटलाइन करने या उसकी कॉन्टूरिंग करने में, तो वहीं पर जो एआई टूल्स है वो उस प्रोसेस को 1.5 टाइम्स फास्टर कर देंगे। चलिए एक बड़ी मैं कहूँगी उपलब्धि है यहाँ हेल्थ केयर की सेक्टर में। बढ़ते हैं आगे। Finance Minister Nirmala Sitharaman highlighted the application of blockchain technologies in her impact statement, predicting a 46% increase in usage in the coming years. This statement likely confirms the rollout of India's blockchain era. Indian states are collaborating with stakeholders to accelerate blockchain adoption in public sector projects. Andhra Pradesh is working with ZB Data and Hitachi for blockchain-based land registry solutions, while the UP government has partnered with UNDC. West Bengal's municipal corporation are using Linked for birth and death certificates. Assam and Tamil Nadu and Telangana are collaborating with private sector, academia and startups for blockchain IP development and educating youth. तो ये एक और बहुत अच्छी खबर है कि ब्लॉकचेन को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी यूसेज बढ़ रही है, उसे अडॉप्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन है उन्होंने भी कहा है कि आने वाले समय में 46% यूसेज जो है वो ब्लॉकचेन की बढ़ेगी, और हम देख भी रहे हैं पूरे भारत में किस तरह से ब्लॉकचेन का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। कहीं पर अगर बर्थ सर्टिफिकेट्स और डेथ सर्टिफिकेट्स के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है, कहीं पर लैंड रजिस्ट्रीज के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो कहीं पर जो है ये एजुकेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, हर सेक्टर में इसका यूज़ हो सकता है और बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, अपकमिंग टेक्नोलॉजी है। Moving on, the Uttar Pradesh government has unveiled its ambition to transform key towns into AI and IT centers. The decision follows Prime Minister Narendra Modi's announcement last month from the US that there have been groundbreaking improvements in AI and that India and the US are at the forefront of developments. Lucknow, Kanpur, Gautam Budh Nagar, Varanasi and Prayagraj are among the cities slated for AI and IT-based transformations. Meanwhile, Lucknow has been designated as India's first AI city as part of an overarching plan to catalyze the 5 cities as future IT and IT-enabled services centers. तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एक बहुत ही अच्छा स्टेप लेने जा रही है, जो कि अपने मेजर जो उनके टाउन्स है उसे आईटी सेंटर्स और एआई सेंटर्स बनाना चाहती है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं एआई को लेकर। अगर हमें याद हो कि जब सैम ऑल्टमैन इंडिया आए थे और उनसे मिले थे तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ओपन एआई के सीईओ हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी ने पॉजिटिवली लिया था इस चीज़ को और एआई के बारे में भी काफ़ी अच्छी बातें कही थी। तो अब यूएस में भी उन्होंने ये कहा है कि यूएस और इंडिया आर एट द फोरफ्रंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एआई और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है एआई में, तो अडॉप्शन भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है एआई का। तो इसी के चलते अब जो यूपी गवर्नमेंट है अपने जो मेजर टाउन्स है उसे आईटी सेंटर और एआई सेंटर बनाना चाहती है। और हम देखें तो लखनऊ को इंडिया की फ़र्स्ट एआई सिटी कहा जा रहा है। तो लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर या जो ऐसी सिटीज़ हैं वहाँ पे जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन देखा जा सकता है एआई
जाएगा, जो अपने आप में एक बहुत ही प्राउड फील करने वाली बात है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। Bitcoin miners are awash with funds from transaction fees, a multi-million-dollar windfall generating this past quarter due to the popularity of BRC20 tokens and ordinals, according to Coinmetrics. The crypto analytics firm said that a formerly tepid fee market for Bitcoin miners has been suddenly upended, with its latest state of the network report finding miners earning $184 million from transaction fees from April through June. Compared to $2.4 billion in Bitcoin mining revenue overall, that figure may sound small, but the latest transaction fee total represents more than 5 preceding quarters combined, Coinmetrics said. It described the shift as an exceptional change influenced by BRC20 tokens. तो यहाँ देखा गया है कि बिटकॉइन माइनिंग में जो ट्रांजैक्शन फीस है उसमें एक बड़ा हमने जंप देखा है। $184 मिलियन की जो है उसमें कुल उन्होंने इकट्ठा किए हैं, उतने इतनी राशि इकट्ठा की है। तो बात ये हो रही थी कि अगर हम देखा जाए तो $2 बिलियन की जो है ओवरऑल बिटकॉइन का रेवेन्यू रहा है, लेकिन उसके सामने ये अमाउंट जो है छोटा दिखता है। लेकिन एक्चुअली में अगर से हम लोग ट्रांजैक्शन फीस की बात करें बिटकॉइन माइनिंग में, तो ये पिछले 5 क्वार्टर्स से भी को मिलाकर भी उससे ज़्यादा बड़ी रकम है। और ये आई थिंक एक बड़ा ही जंप इसलिए आया क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ दिनों में जब बिटकॉइन ETF के लिए फाइल किया, ब्लैकरॉक ने, इन्वेस्को ने, विजडम ट्री ने, बहुत सी कंपनी से फाइल किया, तब हमने देखा कि एक बिटकॉइन में एक हमने जंप देखा, एक सर्ज देखा और बिटकॉइन की डोमिनेंस भी बढ़ी। 50% से ऊपर जो है उसकी डोमिनेंस बिटकॉइन की चली गई, जो कि 2 साल में पहली बार हुआ। इससे पहले 2021 में जो है 50% की डोमिनेंस हमने BTC में देखी थी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन माइनिंग में भी जो ट्रांजैक्शन फीस है उसमें एक अच्छा बड़ा फायदा हो रहा है। जी, तो बहुत ही अच्छी खबर है ये क्रिप्टोकरेंसी सेक्टर के लिए। मूविंग ऑन, Hollywood legend Steve McQueen is racing into Web3 through a new non-fungible token collection honoring his love for motorcycles and his reputation for being the king of cool. On July 14, the McQueen estate, in partnership with Web3 talent agency Verified Labs, contemporary artist Michael Kalish, Triumph Motorcycles and Web3 animation studio Immersive Entertainment Laboratories will release a collection of 1,000 generative art collectibles with varying rarity traits remembering the late actor. Sold on the Theta Drop platform, the project was inspired by an original portrait Kalish created of McQueen in 2022 with help from McQueen's grandson Trace. Collectors of the King of Cool Racing Team NFTs will receive a digital motorcycle shipping crate that they can pry open to reveal a one-of-a-kind virtual Triumph Bone Wheel T100 motorcycle. तो स्टीव मैकक्वीन, जिन्हें किंग ऑफ कूल भी कहा जाता है, उनको ऑनर करने के लिए एक NFT कलेक्शन रिलीज़ किया जा रहा है क्योंकि उन्हें बहुत प्यार था रेसिंग रिलेटेड मोटरसाइकिल से। तो ये जो कलेक्शन है वो भी इसी से रिलेट करने वाला है और जो भी इसके टोकन होल्डर्स होंगे उन्हें एक्साइटिंग इवेंट्स और गेम्स का एक्सेस भी मिलेगा। विशाखा, आई थिंक ये बहुत अच्छा एक तरीका है क्योंकि सिर्फ स्टीव मैकक्वीन ही नहीं, अगर हम बात करें लेट एक्टर्स जैसे कि मैरिलिन मनरो या ब्रूस ली, इन सब की भी सारे जो लेजेंड्स हैं जो अब हमको छोड़ के जा चुके हैं, उन पर बहुत अच्छी NFTs निकली हैं। आई थिंक ये बहुत अच्छा तरीका है उन्हें याद करने का भी, और जो उनके फैंस हैं, जो उनके आर्डेंट फैंस हैं ओवर दीज ईयर्स, इन दशकों के दौरान, उनके पास कुछ ना कुछ उनका कलेक्टिबल, एक छोटी सी याद हमेशा उनके फैंस के साथ रहेगी। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट आइडिया। करेक्ट। So that's all in this episode of the Weekly Wrap. This is me, Vishakha Thakur, signing off. And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3.2TV. And for more information and updates, log on to our website www.3worldstv.io or scan the QR code. Have a great weekend.